Hello, good evening all. Good evening, sir. Good evening, sir. Good Good evening, evening, sir. sir. Screen is visible to all. Yes, sir. Sharing. Okay. So today will be start from meeting that how the communication meeting. So in that case of communication meeting, uh, where first thing. So that chapter we discussion about the meetings. Okay. The overview regarding the meeting. What is the meeting regarding? The meeting will be discussion on point. Any organization, it is a very discussional point for any specific topic or any specific particular section that depend upon that agenda. Okay. So when you go for the meeting overview idea, so we are thinking about what is the basic benefit. The benefit is the sharing the information, आपका productivity improvement, then resolving the any communication gap between any core team member or any departmental issue. It can solve with the meeting, and also it will be define your addressing concern employee, and also discuss about any or new policy will be maybe introducing, otherwise any doubts or anything else regarding your matter. Okay. So different type of meeting will be held on in your day, your organization. Maybe it will be weekly or day basis or monthly basis or seasonal basis or year wise. It will be defined. So different meeting will be having that in your organization. Suppose I will belong to any university college regarding organization. So we are deciding the meeting like your weekly wise. That weekly wise you can define maybe course coverage meeting, review on the course coverage meeting. Otherwise you are having that meeting on that any uh, youth club inaugurational discussion about the youth club, how it will be arranged, it how the functional will be, any function like. So first thing that we are find out that one notice regarding the meeting, then agenda or the discussional points, it should be very clarified that. And after the meeting will be held, okay, though you are maintain some minor meeting of minors, ओके, जो डिसाइड होते हैं आप लोगों का मीटिंग में, वो माइनस ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग में डिसाइड होता है, वो मेंटेन होता है आपके रजिस्टर. फाइन, दैट शुड बी डिफाइन एमओए. And then we have to written as like what are the number of members will be present, they have signed it, and that making a one circular to distribute to other employee. Fine. So in that cases, the meeting or different type of meeting will be having that maybe status update meeting, decision making meeting, planning meeting, collaboration meeting, then problem solving meeting,
A number of having that innovation, idea, team building, brainstorming, a number of things of meeting will be available. That will be any depending upon organization that decided that. Okay, and that decided that defined that these are the activities. Suppose that notice will be. Suppose I am defined a course coverage meeting. So I am defined one course coverage meeting. So I am first I have make a notice to all HOD to submit the course coverage. It will be branch wise and your semester wise and course wise. It will be submitted. What are the till now? What are the percentage of completion of your course? They have submitted. Okay, they have submitted. Then after the meeting will be decided. One day it will be discussion about this. Suppose that course is suppose strength of material. It is the course under the third semester diploma civil engineering. So that civil engineering strength of material. Now what is the lesson plan? That the this much of today this much of percentage of lesson plan to be covered, and the faculty concerned faculty will be completed. Suppose this percentage, so it will be match. If will be differ, suppose it will be differ. Suppose you are on the month of suppose you have decided that the 20% to be complete according to your lesson plan, but it should be complete as 15%. So why it is a lacuna? What is the differ? Why it is differ from 5%? They have decided that. Why it will differ? Maybe it is maybe sir less number of class will be having that. So maybe holidays or many anything else. So I want to that complete that 5%, so it will be match my next month of course of completion target. So मतलब मेरा सपोज मंथ ऑफ वन में मेरा 20% कंप्लीट होना चाहिए था, वो मेरा अभी 15% है, तो मंथ ऑफ टू में मेरा 40% कंप्लीट होना चाहिए, तो मैं अभी 5% पीछे हूँ, तो 25% मुझे कवर करना पड़ेगा नेक्स्ट कमिंग मंथ में. तो व्हाट इज द how what is the taking the step on that point? So we are deciding that some special class or doubt clearing classes or any extra classes. They have a three extra things: one special class or doubt clearing classes or any extra classes. So we are deciding go for the extra classes. The how it will be conducted, they have decided that your higher authority will be decided that extra classes it is after the time period. Otherwise, your any Sunday will be decided one day working period. They have decided that. And that much things will be decided that on that meeting points, and it will be defined in the MOA. That is a define your minutes of meeting. It should be clarified to be written one by one. So after that, it will be circulation. Then it will be informed the concerned faculties. So, so in that point of that, the your your meeting preparation. That means your clarity of purpose of aim is I'm defined that a course coverage. In that cases, the meeting course coverage will be defined. We do not discuss about any the science club, we're getting science club or any internal examination, any other things. Those are not come under this course coverage part. We are not discussing about that. So we are identify the priority of goals. आपका जो भी प्रायोरिटी पॉइंट है उस गोल्स को हमको डिफाइन करना पड़ेगा उस पॉइंट. Fine. Then examining, then decided that, and then decide your agenda point. If you add in the course coverage, suppose I am adding the point more than point added will be course coverage, maybe internal examination, maybe practical sessions, how much practical will be conducted. Maybe I am added these extra points. Then first I am discussing about the course coverage. Then if it possible, then I am going for the practical classes regarding or in any internal exemption. Also I am discussing also about the surprise stage, quiz stage, new things to be added that in our course coverage. Fine. So it will be clear in the clarify your agenda. Agenda first discussion, then it will be decided after that. So in the agenda, it will be defined date, your form two form subject will be defined, date defined, start of meeting defined, end of meeting defined, time of the meeting maybe 1 hour, maybe half an hour. That not define the meeting means like 5 hours. No, it will define it. Now, depending upon the content of meeting, maybe it will be longer than. Okay.
So maybe you can add it location, maybe added agenda wise 1, 2, 3, 4, 5. What are the leaders? What are the in charge name? What are the expected outcomes that decided that this is the expected output till now it not covered. So what is the remedies on that point? Okay, these are the agenda to creating of that your complete of meeting of this. Then you have to be scheduling your meeting. Agenda first defined, then you will be going for the scheduling points. Fine. These are the defining of the minutes of preparation. Okay. After the preparation will be defined. That means you are sharing your agenda, circulating the additional information. Location is one of the fact. It is not possible. Location means organization में meeting हो रहा है तो location की क्या जरूरत है? उसी organization में कोई में meeting होगा. बस आप venue address बता दीजिएगा. This classroom is 1 or 2, 3 or any conference hall or seminar hall. This branch of that. Depend upon that. That's why this location is mentioned here. Okay. But in a minus meeting, after the meeting will be going on, they are maintaining some templates. That templates is name of the organization. Suppose I am written is a temp of organization. Suppose I am written here kit. Suppose nature of meeting decided that it will be course coverage. I am writing course. Date of day means suppose it is a today's date. It will be 13/1/2022. Time of place. So time is suppose 3 p.m. Place is your conference hall. 1. Suppose I am giving. Name of the chairperson, that will be principal. Member of present, all HODs. Departmental HODs. Agenda, the discussion is the course coverage. Resolution is what are the action on that. If any resolution will occur, that will mention point wise. Then thanks of the chair. It will be thanks from the principal. If will be because principal will be circulated the notice. Okay, this is the maintain of your MOM. Fine. So if the maintenance properly, then it will be more number of features to be added. That means your leader should be defined here. Propose is well defined here. Agenda also well defined here. Management with time management also be the one of the point. I'm giving the example now. This month one, I am covering the 20% of the syllabus, but this time will be covered the 15%. So month two, I am required to 40% to be completed. So we are lack by 5%, then more on 20% to this coming month. So it will be 25 months, 25%. So I am taking extra classes. That's the time management. That means when month two, when I'm reaching a month two, then it will be completed as a 40%. The time management will be fine there. Okay. Participation of the suppose that participation and the that the leader also they give me moderator also will be defining point. Fine. These are the points of define according to the features of the points of the methods. These are the meetings, types of meetings, and then minus of the meetings. Agenda will be creating preparation. Then it will complete your whole meeting of the point. So in that basis of the meeting, we are deciding some models. That model will define IPO, input, process, and output. What is this IPO? We know that this IPO जनरलाइजेशन ना कुछ इनपुट होता है हमारे पास उसको हम प्रोसेसिंग करते हैं सिस्टम में देन आई एम गेटिंग सम आउटपुट रिजल्ट it is generalization things. So in that particular cases I am defining here IPO here. It is written that input cases that would be what will be useful to create this output. One thing that means report data. दैट मीन्स सपोज मीटिंग में आपका कुछ कोर्स कवरेज के बारे में डिस्कशन हो रहा है वो तो हमको पता है कोर्स कवरेज में आ रहा है तो व्हाट आर द इनपुट्स रिगार्डिंग ऑफ द डेटा मतलब मुझे बस लेसन प्लान मुझे पास होना चाहिए तो हाउ मैं कैसे मैनेज करूंगा मैं कैसे मैच करूंगा इस पर्सन का दिस कंसर्न फैकल्टी का मेरा कंसर्न सब्जेक्ट में इतना परसेंट तक कवर हुआ है तो मुझे वो लेसन प्लान चाहिए दैट इज द इनपुट मटेरियल्स लेसन प्लान हो सकता है आपका अदरवाइज ये सिलेबस हो सकता है क्योंकि सिलेबस के थ्रू से हम लेसन प्लान बनाते हैं कंसर्न फैकल्टी दर प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान ओके तो पहले केसेस में हमको सिलेबस के थ्रू से लेसन प्लान बनाया गया है नहीं वो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा बिफोर योर स्टार्टिंग ऑफ द क्लासेस और कमेंसमेंट ऑफ द क्लास ओके दैट इज योर इनपुट मटेरियल्स टू बी क्रिएट क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका आउटपुट रिक्वायर्ड होगा
जनरेट होगा। फाइन। अगर मैं प्रोसेस में जा रहा हूं, अगर प्रोसेस में जा रहा हूं तो यहाँ पे भी लिखा है हाउ द इनपुट्स विल बी यूज टू क्रिएट दैट डिजिट आउटपुट, इट इज योर एजेंडा। एजेंडा में आपका पूरा प्रॉपर डिसाइडेड होता है। दिस फॉर्म मतलब कोई फंक्शनल फंक्शनल के लिए आप ले जाओ, ऑनलाइन फंक्शन के लिए आपका वो टाइम मेंशन होता है। 10 a.m. inauguration, 10:05 to call all the respectable chair or dignitaries. Then 10:15 the lighting lamp, 10:6:20 the addressing by principal, 10:25 addressing by chief guest. Then 10:30 there your technical session will be start from 12:30. Then after the 12:30 it have some lunch. Okay, the details were written in the form of agenda and we have just followed that details point and time with the time management. Then we will think after the 5 o'clock our complete my meetings or my functional point meetings, it will be covered all of things. It will be covered by one. So I am getting at last final I am getting some required decisional plan or complete my tax. That fine. The all our things will be maintained that IPO models. That IPO models will be defined in this point input processing output input process output model, that will be structural approaches to ensure all the productivity. It's follow like state forward post process and getting some desired outputs and move into the process by through a complete by all are finally input. Pura desired what are my destination point, what is the desired my output, I will just find out that. On the basis of desired output, we are just follow up that. And that IPO is involved to that. Improve your clarity, your alignment, and your results. Fine. So on that basis, we are defining our role of member of meetings. That based on this IPO process model, I am defining our role of member of the meetings. So that means suppose that will be defined. Suppose it is the head one, it is the next head one, next head two, this is the next head three. I am thinking that. I'm not discussing about the timekeeper, scribe, observer, energy monitoring. I'm not discussing about it. I'm discussing only head one, head two, and head three, head four. That's all. This is the managing. They are managing the time and keep all the agenda in your head. Head decide करते हैं जो भी managing head, so the keeping the track of the agenda, and that point of view you have to be discussing and record everything. It next head one. Next, you are going for the participation teams. Next level of they are monitoring or they are use that on the basis of this agenda they have followed that. Okay, if any changes, then they have the call to break. That means suppose your agenda will be mentioned here. Third point, the addressing by principal, but in that moment the principal is absent. So we are just go for the fourth one, addressing to other one. If suppose your technical session one will be handled by TCS member, but that TCS member is absent. So we are now immediately we are decided that if I will have a level in the Infosys member, so I am decided to Infosys member to taking the part in technical session one. Just immediately that point the schedule will be changes. Your paper presentation like. Okay, we are all are prepared for that paper presentation. So we are making have a number 1, 2, 3, 4. If two will absent, we are moving from the 3 and 4. No problem. If two will be present after that, then we'll give a chance. Otherwise, they are absent. That means no meeting will be if meeting will be start that never end, but never end with your conclusion. They have some conclusion. If any head member will be present, if topmost head will be absent, then meeting will be postponed or any other. Okay, that is my point is conflict. रिगार्डिंग योर कन्फ्लिक्ट आपके लोग मीटिंग में बैठते हैं, मीटिंग में जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है आपके जो
जो कुछ बंदे ऐसे होते हैं वो आपको आप जो अगर डिसाइड करते हैं कुछ, वो आपको नेगेटिविटी के थ्रू से आपको वो मना करते हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, दैट इज द योर कॉन्फ्लिक्ट arising between the all things. So it will maintain with your some positive and negative outcomes. कॉन्फ्लिक्ट में मतलब कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा, आपको प्रॉपर आंसर मिल सकता है। सपोज ये डिसाइडेड हुआ है, सपोज दैट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द पॉलिटेक्निक कॉलेज, सो इन योर कॉलेज दैट नंबर ऑफ ब्रांचेस इज सपोज 5, बट यू मेंशन हियर इन मीटिंग 4, इट विल बी रेक्टिफाइड। या आप डिस्कशन का नहीं सर वो वहां पे 5 नहीं है, यहाँ पे 4 है। नहीं तो आपको नहीं सर, नंबर ऑफ सीट विल बी 120, इट विल बी 125 सर दिस टाइम। ये पॉजिटिव आइडिया में आ सकता है, बट नेगेटिव थिंकिंग में क्या हो सकता है, बहुत डिफरेंट इशू होता है। पेपर इवैल्यूएशन फॉर डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज। अब एनालिसिस होगा सर उस बच्चे को इतना कम मार्क मिला है, मुझे भी इतना कम मिला है। अगर डिसाइड हो रहा है डिस्कशन अबाउट द वीकनेस ऑफ स्टूडेंट, वीकनेस स्टूडेंट हाउ वीकनेस ऑफ स्टूडेंट रिगार्डिंग के बारे में अगर मीटिंग हो रहा है, अगर मेरा क्वेश्चन आएगा हाउ कैन आई नो दैट आवर स्ट्रेंथनेस ऑफ स्टूडेंट, मैं कैसे बेस्ट ब्राइट स्टूडेंट निकालूंगा, तो कोई बोलेगा इंटरनल मार्क्स से निकाल सकते हैं, कोई बोलेंगे सेल्फ स्टफ मार्क्स से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ बंदे बोलते नहीं सर हम एक टेस्ट करेंगे, टैलेंट टेस्ट करेंगे, टैलेंट सर्च टेस्ट करेंगे। तो डिपेंड करेगा उसके ऊपर, नंबर ऑफ इश्यूज विल बी अराइजेस दैट पॉइंट, नंबर ऑफ इश्यू विल बी अराइजिंग दैट पॉइंट्स। Okay, so previously we were deciding the meeting and point, it will be deciding this point, the meeting overview, type of meeting, what are the preparation and manners of meeting, what positive and that IPO process. And always your meeting should be decision making group communication, group discussion is the best always. Okay, so we'll move from this cross cultural communication, this is the no, sorry huh. Now I am coming from this employment communication. Regarding this employment communication, there have some points. You are all of you related know, आपको पता है इस सारे पॉइंट के बारे में, आप लोग यूज करते हो, जैसे रिज्यूम बनाते हो, वीडियो रिज्यूम भी बना चुके हो, सीवी बना चुके हो, इंटरव्यू पोर्टफोलियो आप लोग चेक करते हो कभी भी इंटरव्यू जाने से पहले, दैट विल बी हाउ द इंटरव्यू लाइक योर पर्सनल इंटरव्यू, पैनलाइज इंटरव्यू। okay, maybe interview may be one to one communication or otherwise one to many communication or many to many also communication. Okay, there are the different type of interview will be having that, there's a process of interview, how process कैसे होता है इंटरव्यू में, मतलब आपका कोई इंटरव्यू में प्रोसेस आ रहा है तो कोई टेक्निकल इंटरव्यू हो सकता है, अदरवाइज आपका एचआर राउंड का इंटरव्यू हो सकता है, नहीं तो आपका पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, अदरवाइज आपका साइक्लोमेटिक टेस्ट का इंटरव्यू भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरव्यू। अगर एजुकेशनल के बारे में चले जाते तो डेमो इंटरव्यू था, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में पूछेंगे, टेक्निकल इंटरव्यू। okay, different type of the interview that are posting and how they your all of you interact that face always. Then have some group discussion, that one the part of the also the interview the part, like a different type of group discussion होता है, different type of group discussion होता है। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन पे, एक पॉइंट है वहाँ पे, yes, the type of group discussion, that means your group discussion हमेशा आपका टॉपिक बेस्ड में होना चाहिए, अदरवाइज आपका केस बेस्ड में होगा, अदरवाइज योर आर्टिकल बेस्ड में होगा। टॉपिक बेस्ड मतलब डिपेंड करता है, या आपको इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बेस्ड टॉपिक होगा, आपके उस टॉपिक के ऊपर आपका नॉलेज हो सकता है, वे नहीं भी नॉलेज हो सकता है, फाइन। जब भी आपका टॉपिक डिस्कशन होता है दैट इज द बेस्ट थिंग, या आपके टॉपिक में ऊपर हो रहा है कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ये बेस्ट एडवांटेजेस होता है क्लिक करने के लिए। बट अगर आपको कोई केस स्टडी दिया गया तो ये मैक्सिमम एलिमिनेशन राउंड होता है केस स्टडी में, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव थिंकिंग से आएगा, कुछ नेगेटिव थिंकिंग आएगा। जैसे आपका आर्टिकल बेस्ड पॉइंट, केस बेस्ड, दिस इज द केस बेस्ड।
That means it is a very hypothetical situation. That's why I'm saying some positive and some negative thing. And don't try in your group discussion like your fish market. First listen to everyone, then you speak. You wait for your turn. जब आपका टर्न आता है, आपको बोलने के लिए बोला जाता है, आपका पॉइंट बोलने का टाइम आ जाता है, आप बोल सकते हो, उससे पहले मत बोलो। उससे तो अलग बात होता है, आपका फिंगर आउट होना नहीं चाहिए, आप सिट एट वेरी कामली एंड कूलली, आप बैठ सकते हो, उसको बैठने का भी कोई तरीका होता है, बट दैट वुड बी डिफरेंट थिंग। बट मैं टॉपिक के बारे में जा रहा हूँ, अगर टॉपिक के बारे में जा रहा हूँ, जब भी आपको केस बेस मिला, फर्स्ट थिंग, सपोज आपको कुछ केस बेस कुछ मिला है, मैं आपको दे रहा हूँ एक छोटा सा केस बेस दे रहा हूँ, सपोज मैं जनरलाइज केस बेस दे रहा हूँ, एटीएम विड्रॉल सिस्टम। So I'm giving that ATM withdrawal system. Fine. Then ATM withdrawal system, some one student will be saying that the topic the ATM withdrawal system. So first we will go for the ATM and check my ATM card and insert our ATM card. It will be verified. Then fine. Then you will give your PIN number. Then go for your withdrawal. Then withdrawal था ना? So we would go for the withdrawal. Then pick if you have a balanced, then you pick out the cash. Then लिव आउट। ये आपका जनरलाइजेशन प्रोसेस हो गया। देन अदर क्वेश्चन वो कुछ बोलेंगे, स्टूडेंट बोलेंगे सर नो 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 दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे, वी आर हैविंग दैट व्हेन आई इंसर्ट माय एटीएम कार्ड दे आर हैविंग दैट सेइंग दैट चूज ए नंबर 0 to 99। फाइन, that is having a process, a different banking sector, it will be maintained different way। मैं जैसे आपको पहले केसेस में ले जाता हूँ, 10 years बैक 8 years बैक ले रहा हूँ। एचडीएफसी में फर्स्ट जब हम इंसर्ट करते थे एटीएम कार्ड, वो कार्ड अंदर ही रहता था। मे बी समवन टू फॉलो अदर बैंक भी फॉलो दैट प्रोसेस। अभी अभी के हर एटीएम में आप जब इंसर्ट करोगे एटीएम कार्ड, वो कार्ड अंदर रहता है प्रोसेसिंग के लिए। फाइन, बट पहले लास्ट 8 years एगो एचडीएफसी में वो प्लानिंग था, हम कार्ड स्वैप नहीं कर रहे थे, इंसर्ट करके इमीडिएटली निकालते नहीं थे, वो कार्ड विल बी हियर, दैट विल बी प्रोसेसिंग पॉइंट। एक ये बात अगर हम ऐड करेंगे उसमें कोई डिफर नहीं होगा, बट दी ओनली द मेथड इज दैट insert the ATM card will be verified, then you will give your pin, then pin will be verified, then you're giving your money transaction for a withdrawal money transaction, they have a money, then you are having that pick out the cases, otherwise giving as a error or insufficient balanced। That is the best generalization thing, case study base, simple, straightforward and simple answer। Fine. So always you are facing some hypothetical situation, so you try to avoid this thing, hypothetical situation, you are doing always taking as positive thinking, no doing any negative, वो ये था वो था ये हो सकता था नहीं हो सकता नहीं, only just check first what are the positive thinking, the topic of the positive। फाइन, अगर कोई आर्टिकल बेस में आ रहा है तो आर्टिकल बेस में आएगा तो आपको वो रेंज के थ्रू से आ जाएगा, आपका करंट अफेयर आ सकता है, पॉलिटिक के ऊपर आ सकता है, इकोनॉमिक के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर आ सकता है। सो यू रिक्वायर्ड सम टाइम, दैट विल बी, आपको कोई आर्टिकल दिया जाएगा, आप उसको चेक करोगे 4 to 5 minutes, देन यू डिसाइडेड दैट टू स्पीक समथिंग एल्स। ओके, ये आपको मिलेगा जो टॉपिक, अगर कोई आर्टिकल दिया जाता है डिस्कशन के बारे में। सो हमेशा अदरवाइज ऑलवेज यू आर गिविंग एज ए टॉपिक बेस्ड डिस्कशन, तो ये आपको टॉपिक दिया जाता है, ये टॉपिक आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पता हो सकता है नहीं पता हो सकता है, अदरवाइज आपके नॉलेज के अंदर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, नहीं तो कोई कंसेप्चुअल थिंकिंग बेस में आएगा। कंसेप्चुअल थिंकिंग में सम कुछ इंटरनल पार्ट आपको पता होगा, कुछ इंटरनल पार्ट पता ही नहीं होगा। तो ग्रुप डिस्कशन इज द मेजर रोल इन योर इंटरव्यू पैनल, और इसमें ज्यादा बच्चे डिस्क्वालिफाइड होते हैं। ये एलिमिनेशन राउंड है, ग्रुप डिस्कशन as a use as a any MNC sector, that will be used as that very elimination round।
दिस इज प्योरली एलिमिनेशन राउंड। यहाँ पे आपका चांसेस 1%। आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो, मुझे पता नहीं, ज्यादा भी बेटर हो, दैट विल बी 1%। फाइन। सो इन दैट ग्रुप डिस्कशन विल बी डिसाइडिंग दैट प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू। आपको ये भी मैं एक बार फिर पहले से दिखा देता हूँ आपको। दिस इज द ग्रुप ऑफ डिस्कशन था, देन यू आर हैविंग द ऑफर लेटर, दैट विल बी फाइन। सो आपको रिज्यूम में आपको बता देता हूँ, रिज्यूम आप लोग समय ऑल ऑफ यू प्रिपेयर योर रिज्यूम दैट। तो रिज्यूम में आप लोगों का पहले क्या होना चाहिए, आपका सपोज यहाँ पे आपका एड्रेस होना चाहिए, यहाँ पे एक फोटो होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिफाइन होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी डिफाइन होना चाहिए फ्रॉम 10th टू ऑनवर्ड्स लास्ट क्वालिफिकेशन। then then have you your project details, subject matter details, your skill set, you have defined everything. If you have some paper publication, they have to mention it. ओके। फर्स्ट थिंग, आप जहां पे भी रिज्यूम डाल लो वहां पे पहले चेक करो वो कंपनी कौन सा, पोर्टफोलियो उसका क्या है। ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में डाल रहे तो वहां पे पब्लिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। इट इज योर एक्स्ट्रा थिंग, आप ऐड कर सकते हो अगर आपका पब्लिकेशन है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप डालो तो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो में आपका पेपर पब्लिकेशन इज मस्ट रिक्वायर्ड। ओके। तो डिपेंड करता है आपके यहाँ पे। फाइन। सो दिस इज योर सीवी मेट थिंग्स, दिस इज योर सीवी मटेरियल्स। ओके। तो so these are the first thing. So I am deciding that your as resume, video resume, like your interview portfolio, interview section, and the what are the types of interview will be है। जॉब के लिए डिफरेंट टाइप हमारा इंटरव्यू पॉइंट होता है, आप एक बार चेक कर सकते हो यहाँ पे। दिस इज द इंटरव्यू पॉइंट। जैसे आपका टेलीफोनिक राउंड हो गया, पर्सनल इंटरव्यू हो गया, बिहेवियरल बेस्ड ऑन इंटरव्यू, टैक्स बेस्ड इंटरव्यू, स्ट्रेस, स्ट्रेस के कारण से मेरे को मुझे जितना याद है, मेरे इन 2005 इन माय कंपनी, आई एम जस्ट अटेंड वन कंपनी, नेम मुझे, हाँ, जेनसॉफ्ट टेक्नोलॉजी था वहाँ पे। आई एम अपियरिंग दैट मुझे वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट, स्ट्रेस, व्हेन यू स्ट्रेस व्हाट टू डू। आप जब स्ट्रेस होता हो आप क्या करते हो? मेरा आंसर था कुकिंग। ओके। Nice answer, sir. Nice one, sir. उसके दोबारा मुझे पूछा गया कुकिंग इज अ वेरी स्ट्रेंज दैट, जितना भी मेरा स्ट्रेस होता है वही कुकिंग में डाल देता हूँ। Sir, हाँ, every frustration in the cooking. दैट्स बेटर आंसर। आप कहाँ पे Generally, आपको अपना फ्रस्ट्रेशन generally निकालोगे, people बोलो say मुझे। music. आप अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे Generally निकालोगे? people say music. अब म्यूजिक तो लोग सुनते हैं, मुझे Sir, पता है, म्यूजिक से कुछ होगा क्या आपका? ध्यान बढ़ सकता है, स्ट्रेस like, आउट नहीं हो सकता। so basically Sir, like stress out in friend. काम के टाइम पे काम और के टाइम पे डिपेंड करता स्ट्रेस है अगर होता है पर्सन तो के फिर ऊपर, डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर। जिम जिम सिस्टम बंद करके चले जिम जाओ। जिम हाँ, आपका जिम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो these are the different type of interview, so you can focus on that. Basically we are using that telephonic interview and personal interview. Okay, we are using the very daily basis, we are using that personal interview. Okay, so this is your on the basis of employment communication structure. Okay, so on the basis of that, now I am saying e-business technology. It is I am adding with there some cultural cross-cultural communication with e-business technology. I am adding to that point. So first I'm discussing about cross-cultural communication. That cross-cultural difference is that आप जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से बात करते हो। कोई आपका कम्युनिटी से होता है, कोई अदर कम्युनिटी से भी हो सकता है। मतलब आपको क्या होता है वहाँ पे, सपोज आप एक एमएनसी में काम कर रहे हो, बाहर जाके काम कर रहे हो, तो आपका जो लैंग्वेज होता है उसको पता भी नहीं होता है, तो आप कॉमन लैंग्वेज के थ्रू से बात करते हो। ठीक है। तो आपका आपका मन होता है तो उसका लैंग्वेज मुझे भी पता होना चाहिए, वो भी सोच सकता है, वो जो मेरा फ्रेंड्स है उसका लैंग्वेज मुझे भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो वी आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, तो वी आर शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन ऑल्सो। तो हम दोनों का अगर कम्युनिकेशन लैंग्वेज अगर ठीक रहा तो दैट विल बेटर टू वी आर डूइंग दिस जॉब इन वन लेवल।
So that is the point we'll be saying, that cross cultural communication. Okay, that is the cross cultural communication, that is the depend upon the your culture. फाइन. इसमें क्या आया था, दो थ्योरम आया था. एक हॉफस्टेड मॉडल आया था, एक हॉल स्ट्रक्चर मॉडल आया था. हॉफस्टेड मॉडल में क्या होता है, इसमें 6 इंडेक्स होता है. बेसिकली वी आर यूजिंग 5 नंबर ऑफ इंडेक्स, but in that you're in syllabus course of igno material, that will be defined 6 number of index. One is your power distance index, individual and politism, and muscularity and femininity, and this uncertainty avoidance, and long versus and short term versus orientation, and this is the restriction. Fine. So in that point, I am discussing one point, that will be power distance. What is the power distance? क्या होता है, हम लोग जब ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हम लोगों का कोई हेड होता है. हेड होता है, उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल होता है, उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल होता है, उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल होता है. मतलब ये सोच कर वो ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, लेवल 4 है. ये जो लेवल 1 का बंदा होगा वो हाईली एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, उसका पावर ज्यादा है, तो पावरिंग इंडेक्स वो यूज करता है. इधर इंडिविजुअली यूज करेगा, नहीं तो क्वालिटिवली यूज करेगा. क्वालिटिवली तो यूज कभी नहीं करेगा, वो इंडिविजुअली. आपका बॉस बोलता है ना, हमारा काम होता है ना, बॉस इज ऑलवेज राइट. माई बॉस इज ऑलवेज राइट. अगर ये मान के हम चलेंगे तो प्राइवेट में चल सकते हैं. ओके, तो दैट पॉइंट इज वन इज इट डिफाइन दैट योर पावर ऑफ इंडेक्स, दैट वो आपका पावर यूज करेगा, अपना पावर. तो इसी के बेसिस पे जब भी आपका कोई भी कम्युनिकेशन रहेगा, वो ऑलवेज ये आपको तो ऊपर डाउनवर्ड तो मेंटेन करेगा, डाउनवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन. फिर भी ये आपके थ्रू लेवल, दिस लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 4, जितना भी लेवल आपका रहेगा यहाँ पे, वो वहां पे आपका डिसीजन सपोर्ट लेवल आ सकता है, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट लेवल आपका आ सकता है. मतलब कोई कुछ बारे में, कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो आपको क्लैरिटी भी मिल सकता है, क्लैरिटी भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो तो हाईएस्ट पावर में हेड है. आप कोई पूछ भी नहीं सकते हो, कुछ बंदे पूछ सकते हैं, कुछ बंदे पूछ भी नहीं सकते. यहाँ पे कुछ लैकुना रह जाता है. ठीक है, फियरलेस रैकुनेंस. हम लोग बॉस कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ बोल नहीं पाते, फिर भी हम हाँ हाँ ठीक है सर, हम बता देंगे, हाँ हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं नोट कर लिया सर, दैट्स ऑल. इस टाइप का प्रॉब्लम होता है यहाँ पे. दैट इज द क्रॉस कनेक्शन दैट विल बी. इन दैट पॉइंट इट विल बी डिफाइन दैट इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म. यहाँ पे इंडिविजुअल कॉलेजिज्म में आता है. मतलब क्या होता है, जब भी बॉस कुछ बोलता है, वहां पे इंडिविजुअलिज्म आता है. ये तो वो इंडिविजुअली डिफाइन करेगा. अगर जहां पे आपका लेबल वाइज आता है, लेबल 1, लेबल 2, लेबल 4, यहाँ पे तो नंबर ऑफ पर्सन बैठे होंगे यहाँ पे, तो पर्टिकुलर केसेस में क्या होगा, यहाँ पे आपका क्वालिटिव वर्क आएगा. क्वालिटिव वर्क आएगा. मतलब अकाउंट्स में अगर जा रहे हैं, तो अकाउंट्स वाला, एक अकाउंट्स में तो एक बंदे नहीं होगा ना, 2-4 बंदे में. कोई सैलरी स्टेटमेंट बना रहा होगा, कोई टैली में मेथड में डेटा इंसर्ट कर रहा होगा, कोई लेजर मेंटेन कर रहा होगा. दीज आर द क्वालिटिव वर्क, collection of works. But in that cases of power distance, the individual will be making, individual will be maintaining in that your higher level. Particular that section when you have a muscularity and femininity, दोनों केसेस में क्या आता है. मस्कुलरिटी में केसेस में क्या आएगा, यहाँ पे आपका एक पॉइंट लिखा है, द कंसर्न ऑफ अबाउट योर पावर एंड कंट्रोल ऑफ सोसाइटी. In comparison of musculation work, the role model in your society is a low level of the discriminant. Fine. मतलब क्या है यहाँ पे, अगर मस्कुलरिटी केसेस में मैं आ रहा हूँ, जो भी आपका बॉस होगा वो आपको हाई हाई लेवल, हाई इंडेक्स के हिसाब से आपसे बात कर सकता है. फेनिटी में क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट साइड. योर कम्युनिकेशन में आपका जो भी कम्युनिकेशन होगा, वो आपसे हाई एंड लो पिच में रहेगा. फाइन. इसी पॉइंट के ऊपर ये स्टेटमेंट बैठा हुआ है, हॉफस्टेड एंड कल्चरल डायमेंशन मॉडल. फाइन. उसी तरह से आपका आएगा अनसर्टेनिटी अवॉइड इंडेक्स. मतलब आप काम कर रहे हो, कुछ अनसर्टेनिटी एम्बिग्यूटी टाइप डिफरेंस आ रहा है एक पॉइंट में, तो आप अगर उसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आपको टैक्स तो कंप्लीट करना है ना विद इन टाइमलाइन पीरियड में. अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है.
बट दिमाग में ऐसा रह जाएगा, अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसी अवॉइडेंस के चक्कर में दे हैव सम पॉइंट्स। उसी कारण से आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन भी आता है। मतलब आपको जो भी टास्क कंप्लीट करने के दिया गया है विद इन टाइम पीरियड्स, अगर आप उसको कंप्लीट करते हैं, अगर उसको लॉन्ग बेसिस बिजनेस में अगर यूज करें तो कहीं पे भी कुछ भी आ सकता है। क्योंकि आप सोचते हो ना, मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ तो लॉन्ग रन में काम कर सकता हूँ, तो शॉर्ट टर्म के लिए काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में हाई कंटेंट आएगा, लॉन्ग टर्म में हाई कंटेंट आएगा, आपका शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन में लो कंटेंट आएगा। ये नेक्स्ट थ्योरम में लिखा है, हॉल हॉल कल्चर में, जहां पे आपका कंटेक्स्ट आता है, योर कंटेक्स्ट, हाई कंटेक्स्ट एंड लो कंटेक्स्ट पार्ट आता है। अगर इस चीज में आपका अनसर्टेनिटी एविडेंस आ गया तो हॉल में हम उसको क्या रेक्टिफाई करते हैं, टाइम एंड स्पेस के बारे में। स्पेस मतलब आपको स्पेस दिया जा रहा है नहीं काम में, हमेशा स्ट्रेस आउट दिया रहा है क्या, मुझे काम में एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर में स्पेस मिल रहा है कि नहीं स्पेस मिल रहा है, मतलब अपना बात रखने का कोई आइडिया मुझे मिल रहा है ना नहीं मिल रहा है। मैं अपना बात नहीं रख पाऊंगा तो काम कैसे करूंगा। मैं भी कुछ एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मैं मेरा पॉइंट भी कुछ वैल्यूबल है। टाइम तो हमेशा आपका टाइम कल्चर में डिवाइड रहेगा आपका, मतलब आपका ये स्ट्रक्चर इस तरह से है, there is the content, that is the space, and that is the time. This is the intersection. It is a Venn diagram of this content, time, and space. On the basis of you have maintained this long short term, this uncertain evidence, muscularity, infinity, and individual. And last is your power index. This is your cost concern indexing methods. इस बेसिस में आपका जब भी काम होता है, तो ये जब भी आपका ई बिजनेस एप्लीकेशन आएगा, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। ई बिजनेस एप्लीकेशन में यहाँ पे आपका ई बिजनेस मेथड दिया गया है, एक कस्टमर वैल्यू आ रहा है। आपका जो प्रोडक्ट रहेगा, वो प्रोजेक्ट रहेगा, वो कस्टमर वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं किसी चीज को अवॉइड करके चला गया हूँ अनसर्टेनिटी केसेस में, अगर कस्टमर वैल्यू में उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, देन यू फेस मे बी सम फाइन। सो दैट इन केस ऑफ ई बिजनेस मॉडल में अगर आपका क्वालिटी वर्क नहीं हुआ है, इंडिविजुअलिज्म में ज्यादा हो गया, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए जो स्पेस को भी इंटरेक्ट करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है ई बिजनेस मैथड में आपका फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए, बिजनेस स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, सप्लाई चेन टोटल क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट थ्रू दिस सप्लायर एंड बिजनेस पार्टनर्स। On the basis of you have defined your IT infrastructure and globalization enterprise, your ERP method. On the after that they have a customer file। यहाँ पे मेंटेन हुआ है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर आपको डिफाइन करते हो कोई ट्रेडिशनल बेसिस में और ई ऑर्गेनाइजेशन में, दोनों हिस्से में अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हायरार्किकल मॉडल डिफाइन होता है, बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नेटवर्क होता है। ई बिजनेस मॉडल में हायरार्किकल मॉडल मतलब आप कभी चेक किया हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेक करोगे तो वहाँ पे एक हायरार्किकल मॉडल गिवन होगा, मतलब ये आपका बॉस है, यहाँ पे, हाँ सॉरी, मतलब ये फर्स्ट वन, देन सेकंड वन, देन थर्ड वन, देन फोर्थ वन, देन वहाँ पे फिर से मॉडल होगा। दीज आर द मॉडल पे स्ट्रक्चर। ये आपको मॉडल को भी डिपेंड रहेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये डिपेंड करता है हायरार्किकल मॉडल के ऊपर एंड देन इट योर हॉरिजॉन्टल मॉडल के ऊपर। लीडरशिप भी आपका वही डिफाइन करेगा, सेंट्रलाइज्ड करेगा ट्रेडिशनल में कि बॉस जो मेथड बोल रहा है, बट ई बिजनेस स्ट्रक्चर में आपका एवरीवन इज अ लीडर पॉइंट, क्योंकि आपका सेपरेटली काम डिवाइड किया गया है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। कल्चरल केसेस में भी वही तरह उस तरह से आएगा। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे इंडिविजुअल रिवॉर्ड पाते हैं, मतलब काम कोई करता है बट बॉस हमेशा रिवॉर्ड मिलता है उसको। बट इन दैट केसेस ई ऑर्गेनाइजेशन लेवल आप तो अपना ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस सबमिट करोगे बाय थ्रू दिस मेल और एनीथिंग एल्स, फाइन। और जब भी आप मेल करते हो आप सभी को सीसी और बीसीसी रख के मेल करना चाहिए, दैट वुड बी बेटर थिंग।
कोहेरेंस केसेस में यहाँ पे इंटरनल कोहेरेंस रहता है मीटिंग वगैरह में, यहाँ पे कस्टमर रिलेवेंस रहेगा, जो बेस्ट है आप उसी को मैटर करें। नॉलेज भी यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन मतलब क्वालिटी मेथड रहेगा। अलायंस में भी आपका आएगा, मतलब डिस्टेंस पार्टनर अगर कोई है यहाँ पे करंट गैप्स में, ट्रेडिशनल वर्क में रहता था, बट यहाँ पे ई बिजनेस स्ट्रक्चर में क्रिएटिंग ए न्यू कस्टमर ऑल्सो न्यू वैल्यू, क्योंकि हमेशा हर कोई ग्लोबलाइजेशन इंटरनेट के थ्रू से आपके साथ कनेक्टेड है। मतलब अगर ये क्लासेस अगर आपका फिजिकली होता तो यहाँ पे मे बी क्लास स्ट्रेंथ मे बी 10 और 15 और 20, बट दिस टाइम ऑनलाइन इट विल बी 30 और 35। ये डिफरेंस तो रहेगा। तो पहले से बता चुका हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका हेरिकल मॉडल में आपका सेंट्रलाइजेशन पॉइंट है, मतलब टॉप से डाउन, मतलब हेड से जो बात आता है नीचे तक एम्प्लॉय तक, यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। फाइन, दिस इज द ग्लोबलाइजेशन आईटी सपोर्ट मेथड्स। ये आपका मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजी है, किस तरह से प्लानिंग होता है, किस तरह से आईटी ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके ऊपर आपका बेनिफिट्स आए, मतलब कॉस्ट में, कम्प्लेक्सिटी में, पोर्टेबिलिटी में, डिस्काउंट्स, वॉल्यूम ऑफ डिस्काउंट्स, ट्रेनिंग ऑफ कॉस्ट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड इंटरप्रेट। दीज आर द बेनिफिट्स टू for IT related to when I'm related to IT related plan, e-business plan for IT technology plan. This is the globalization strategy for international globalization and transactional cases, जहाँ पे आप लोगों का पॉइंट में डे बाय डे इट विल बी वेरी टू वेरी दिस 3 कम्युनिकेशनल मेथड्स। So in that point, when I'm define your globalization business to e-globalization business, in that point we are define your customer value, product value, operational value, resource value and collaboration to value. That means when I'm collecting that customer, if I'm having that customer, one customer, so in that point nowadays it will be having in globalization n number of customers. Product, that will be same product, maybe modified product, I am used it modified product। जैसे आप मान लो पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट था, तो पहले केसेस में उनका आयुर्वेदिक मेडिसिन आ रहा था। अभी पतंजलि में पेस्ट, टूथपेस्ट भी आ रहा है, सरसों का तेल भी आ रहा है, रिफाइन ऑयल आ रहा है, एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी हैविंग। सुनने में तो आया है जीन्स वगैरह के फैशनेबल भी डिजाइन में भी पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट भी आ रहा Everything, है। sir, everything. एवरीथिंग दैट इज अ प्योरली बिजनेस ओरिएंटेड हो चुका है आपका। सर ग्लोबल बाबा हो चुके हैं वो। वो ऑब्वियसली बिजनेस तो बढ़ रहा है ना। आप मार्केट में हाँ। चले जाओ, मार्केट में चले जाओ, आपका पेस्टिडेंट और डाबर और कोई भी कंपनी ले लो, उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। पतंजलि में 1 रुपया आपको डिस्काउंट कोई नहीं देगा। 90 लिखा है तो 90 में ही बेचा जाएगा उसको। Not even 50%, sir. Because the die-hearted fan are there. आप शॉपिंग मॉल में चले जाइए, आप रिलायंस स्पेस में कभी जाते होंगे, कभी बिग बाजार में जाते होंगे, आपका दिमाग होगा वहां पे थोड़ा सा मुझे डिस्काउंट मिलता है, बट पतंजलि प्रोडक्ट में डिस्काउंट नहीं। दिस इज द ग्लोबलाइजेशन प्रोडक्ट टू एंड ऑपरेशनल, दिस इज द ऑपरेशन टू मेंटेन। मार्केट में वही स्ट्रिक्ट नहीं, हम लोग डिस्काउंट नहीं देंगे, अगर लोगों को खरीदना है तो लोग खरीदेंगे। तो लोगों के दिमाग में दिस इज द आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। मुझे एक बात बताओ, रिफाइन ऑयल तो रिफाइन ऑयल होता है, वो जब अंदर शरीर के अंदर जाएगा वो कोलेस्ट्रॉल ही रखेगा, उसको कोलेस्ट्रॉल को हटाएगा नहीं आपके शरीर में। बिल्कुल सर। प्योर राइट। प्योर है सर। आप ऑलिव ऑयल खा लो, आप सनड्रॉप खा लो, आप सफोला खा लो, जो भी ऑयल इज ऑयल। राइट। Sir, deep observation किए हैं sir. नहीं नहीं नहीं, ऑयल इज ऑयल इज ऑयल, वो कभी अंदर जाके आपको, टूथपेस्ट ले लो, मतलब मुझे तो आज जितना तक पता है दंत Sir, कांति मिट्टी में भी, लगता है टूथपेस्ट में. जो भी हो मुझे पता नहीं, मैं पेप्सोडेंट भी यूज करता हूँ, कोलगेट भी यूज करता हूँ, मुझे कुछ डिफरेंस भी मुझे कुछ आज तक पता नहीं। कोई डिफरेंस नहीं है सर। The मिंट डाल देते हैं। waste of money, nothing else। फिर भी लोग खरीदते हैं, लोगों को दिमाग में पतंजलि का ब्रांड लगा है। Sir, that's why I am telling the die-hearted fans are there. That's all।
सर इतने एमबीएस बनेंगे सर, सारे वही तो कराएंगे। हाँ वो भी ठीक है। जैसे मुझे किसी ने बताया था, पतंजलि प्रोडक्ट से लॉन्ग्स का सोल्यूशन में, लॉन्ग्स में जो भी लॉन्ग्स अफेक्टेड हैं, जो भी पेशेंट, वो सब ठीक हो रहे हैं। द लॉन्ग्स अफेक्टेड पर्सन अगर ठीक हो सकते हैं पतंजलि के थ्रू से, तो सारे हॉस्पिटल तो बंद होना चाहिए। Right, sir. मार्केटिंग मार्केटिंग है सर। प्योरली मार्केटिंग, नथिंग एल्स। जैसे हम हॉस्पिटल से जाने के लिए डरते हैं, वैसे ही सेम है। आपका कुछ होगा, वो कुछ बताएंगे, कुछ दिखाएंगे, आपको तो रुकना है वहां पे जब तक आप मर नहीं जाते। मरने के बाद, मरने के बाद भी वो रखते हैं। दैट शुड बी डिफरेंट। ओके, सर दिस, पतंजलि का वैन भी आ रहा है, उसमें डेड बॉडी लेके जाएंगे। ओके फाइन, दैट शुड बी। तो दिस इज ए, Seriously? हाँ, यस यस, okay. So this much of your total EMS-07 and your e-business, business communication. Okay. तो जो भी नोट्स वगैरह है मेरे पास, मैं आपको बाय ट्यूसडे तक मैं भेज दूंगा। ठीक है? हेलो, ओके सर। ओके, Yes, sir. बाय ट्यूसडे मैं उसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। अगर किसी को पर्सनल चाहिए, अगर कोई ग्रुप में नहीं है, मैं यहाँ पे मेरा मेल आईडी डाल देता हूँ, यस सर। umakant141@gmail.com सर पे और मेल कुछ आईडी। दूसरा सब्जेक्ट का भी नोट्स है सर? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है। सर होगा तो दीजिएगा सर, एग्जाम के लिए अच्छा होगा। ओके ठीक है, तो आप मेल में कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज माई मेल आईडी umakant141@gmail.com। ओके ओके, थैंक यू ओके टू सर। ऑल। ओके ओके, सir. Okay. Thank you, sir. Good night, Thank sir. you, sir. Thanks, sir. All capital, all small letter. yes yes, this is small letter. This Okay, was sir. this Thank is you. your last class. Yes, this is my last class. That is, I'm around UMAKANTA141. You check in chat box, I'm already messaged it। Chat box में आप check। Fine, thank you, Okay, sir. Thank you. thank you। Thank you, sir. Thank you, sir.